smile, that's about all you gotta bring. So enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Ride or die, lean low, getting heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with you steady. Open for plans tonight. Lost in the afterglow. Oh, girl, your love for me keeps calling me, so I'm calling you. Love. हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही? हेलो, आ रही आ रही। गेम की आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है। अरे हेडफोन के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। Take it easy. Things are about to get dicey. Quiet now. मैंने एक चीज देखी है, अभी अपनी दिन में पिंग अच्छी आ रही है लेकिन रात में खराब हो जाती है, यूरोप वाली। Fallen leaves, adorn my night. अरे यार, इसमें काजू ट्रिपल काउंट कर दूंगा, ताकि मटेरियल है ना मेरे पास। ठीक है, लेकिन इतनी भी निकल पाएंगे शायद ही काजू ट्रिपल काउंट हो जाए। Here comes the cat. Busted. Clouds high, the birds call. Wind strike. सुनने में आ रहा है अभी एक्सटर्नल जीपीयू आएगा भैया। एक्सटर्नल जीपीयू तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और लैपटॉप में एक्सटर्नल जीपीयू तो बहुत पहले से चल रहा है। ओह, ये तो नहीं पता था। एक उसका बॉक्स टाइप का आता है, एक्सटेंशन टाइप का, उसमें जीपीयू को लगाया जाता है फिर। ओह, नहीं अभी वह दिखा रहा है क्या, तो 50-90 ये सब आता है। सीधा स्विच बोर्ड से प्लग करता उसको। हाँ वही, मतलब एक बॉक्स टाइप का आता है, उसमें एक्सटेंशन करना हाँ। पड़ता है उसका। Fallen leaves, adorn my night. Follow the wind. Follow the wind.
सॉरी, डेजर्ट वाली इसकी थीम डिप्रेसिंग है यार बहुत। Time to go. क्या लगता है भाई, बताओ तुम्हारा प्रेडिक्शन क्या? बैनर का। वही जो मैं कह रहा सच हूँ, बोल दो। वही जो मैं कह रहा हूँ। वही योइमिया सच बोल याइमी दो। को याइमिको, योइमिया, या काजुआ, कोकोमी। अलहैतम। नहीं, पहले वाले की क्या? बताओ। मेरे को लग रहा है पहले याइमी को, योइमी और कोकोमी से कोई दो कैरेक्टर आएंगे। रेड एंड शोर नहीं आएगी। नहीं आएगी बात। याइमिया, वो याइमी को, याइमिको, योइमिया और कोकोमी, इन तीन में से कोई दो कैरेक्टर आएंगे 100%। योइमिया, और याइमिको। नहीं, गिरना नहीं। हाँ, याइमिको का वेपन अच्छा है क्या? हाँ, कागुरा वैरायटी अच्छा होता है। वो उसको दे सकते हो तुम। स्कारा कांडी। हाँ, लेकिन याइमिको का वो योइमिया का वेपन किसके लिए निकालोगे? योइमिया के लिए। तो वही बात हो गई ना ये तो। ये तो वही बात है। नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा उस वेपन Time to go. में। Clouds high. The birds come. मैं फ्रीडम जोन वाला पे जा सकता हूँ। उस पे मैं भी जाऊंगा। छोटे वाले पे जाऊंगा लेकिन मैं। आयका अला को दे सकता हूँ अलहैतम का वेपन। नहीं, ईएम कन्वर्टेबल है, वो नहीं दे सकते हैं। काजू को दे सकते हो लेकिन। काजू को दिया जा सकता है। हाँ, ईएम कन्वर्टेबल है वो। काजू को तो ईएम भी फिर चाहिए होता है ना। हम्म तो प्लस का बेस अटैक कम है इसलिए आया का तो वो अच्छा नहीं है। हरान ज्यादा अच्छी है आया का पे उससे तो। अरे यार, नेक्स्ट डे था। इनने मेरे पिछले मंथ के नहीं दिए रिवॉर्ड पॉइंट, इसी मंथ के दिए बस। आईसीआईसीआई बैंक वालों तुम्हारी। अमेज़न वाला या फ्लिपकार्ट वाला? अमेजोन फ्लिपकार्ट किसका देता है? एक्सिस? एक्सेस। फ्लिपकार्ट और प्रोडक्ट्स की रेंज कम है यार, इसलिए फ्लिपकार्ट नहीं यूज करता मैं। वैसे मेरे को डिलीवरी फ्लिपकार्ट की ज़्यादा अच्छी लगती, सही बताऊँ तो। फ्लिपकार्ट की डिलीवरी जल्दी हो जाती है। मेरा अमेज़न का जल्दी हो जाता है। फ्लिपकार्ट का भी होता है, हाँ सही बोला। फ्लिपकार्ट की डिलीवरी बहुत जल्दी होती, पता नहीं कैसे। और फ्लिपकार्ट में मेरे को थोड़ा सस्ता ही मिलता है अमेज़न से कभी कुछ चीज़ें। सस्ता तो नहीं बोलूँगा। मोबाइल कुछ तो चीज़ें फ्लिपकार्ट भी सस्ते मिलते हैं, सही बताऊँ तो। मोबाइल है ना, फ्लिपकार्ट पे ही सस्ते मिल रहे हम्म, हैं। मोबाइल का मार्केट तो फ्लिपकार्ट ने बना लिया, अमेजोन से हट चुका Add Astro. Thank you for. है। दे अस्त्रा है बस। हाँ, अब क्या कर लूँ इसमें? इवेंट भी कर लूँ क्या?
मैंने इसमें तो कर दी ना पूरी। रात को तो आऊंगा नहीं अब मैं। नहीं। इवेंट में निपटा देता हूँ। गौरव कंवर, हेलो नाइट वाइटी, हेलो गौरव भाई, क्या हाल है? रात को अगर कोई स्पाइरल की बोलेगा भी कि स्पाइरल करना है तो ही मैं रात को आऊंगा, वरना मैं नहीं आऊंगा। आज शाम को ही होगी। अरे यार जी, तो किसी जगह पे ही है। चलो वो है। विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर? रेडन शोगन। क्योंकि वही एक कैरेक्टर है जिसके लिए मैंने 6 महीने सेविंग करी थी प्रीमो जेम्स की। आया का बोले किस बात का 70-80 हज़ार डैमेज करती हूँ मैं? जब तुमको रेडन शोगन ही पसंद करना था तो। राम को और कुत्ता। क्यों आया? हम्म। आया का बोलेगी काजो काजो ही बोल व्हाट रहा डू यू है। थिंक अबाउट कामिसाटो? आया का वही तो मैं कह रहा हूँ। आया का आया बोलती तो होगी आया किस तो बात का मैं इतना डैमेज करती हूँ जब तुम्हें रेडी नहीं पसंद है तो। एक्चुअली एक आईडी में मैं आया का मेन करता हूँ, एक आईडी में रेडन शोगन मेन करता हूँ। ये इन्होंने आईडी आया जो तो है बोला है। कामिसाटो आया तो हम्म। कामिसाटो आया तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट कामिसाटो आया तो? हम्म। मेरे को चाहिए। कामिसाटो आया तो भी अच्छा कैरेक्टर है। टॉप टीयर तो नहीं है लेकिन हाँ, अच्छा कैरेक्टर है। क्या था वो, मैं भूल ही गया। ये वाला था क्या? अबे कौन है बे, ये कहाँ का है ये? मेरे को तो ऐसा कहीं दिख ही नहीं रहा। अच्छा जी, बे वहां पे हरा हो रहा, यहाँ पे नीला हो रहा। उसका ई का प्ले स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। कामिसाटो याटो का सेटिस्फेक्शन देता है, कच 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 जब पड़ता है वो। बाकी डैमेज वाइज मिड है, बहुत ज़्यादा नहीं। शेंगलिंग के साथ डैमेज अच्छा है उसका। इंडिविजुअल डैमेज उसका चाइल्ड से ज़्यादा है और ओवरऑल टीम डैमेज चाइल्ड की टीम का ज़्यादा रहता है, लेकिन क्योंकि चाइल्ड का हाइड्रो एप्लीकेशन बहुत हाई है। एक दिक्कत है उसके साथ, उसका F2P वेपन अच्छा नहीं है यार कोई, कामिसाटो याटो का।
कोई ऐसा F2P वेपन नहीं है जो उस पर अच्छे से मतलब वर्क करे। जैसे चाइल्ड के पास स्ट्रिंगलेस और रस्ट है ना, वैसा आयाटो के पास कोई सा वेपन है नहीं। अरे यार विश नहीं मिली, गद्दारी कर दे, विश नहीं मिली। स्टोरी क्वेस्ट कौन कौन से पड़े हुए हैं भाई? ये दो दो दिखाया उसने मुझे। हैंग आउट इवेंट, हट। मैं हैंग आउट इवेंट नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, करना ही नहीं मेरे को, क्यों करूँ मैं? आई हैव जस्ट स्टार्टेड जेंशन, आई एम ईयर 40। तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कैरेक्टर है नाहिदर कुकी शिनोबू। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी यार 55 तक, अगर नाहिदा कुकी शिनोबू है तुम्हारे पास तो। और अगर उनको मिस कर दिया है तो आज के स्ट्रीम अनाउंसमेंट में शायद काजू अनाउंस होगा, तो काजू लेना। ये कैरेक्टर काजुआ। स्पेशल इवेंट नहीं करी, करूँ क्या? बाद में करेंगे यार, पहले वाली आईडी में जाऊँ। आई डोंट हैव नाहिदा बट आई हैव C3 कुकी। ओके, नाहिदा नहीं है। हम्म, ऐसा अलायताम के भी आज अनाउंस होने के चांसेस हैं, लेकिन नाहिदा अलायताम से ज़्यादा अच्छी है। ये है मेरी रेड इंशोगन। सब कुछ फूक दिया है इसमें मैंने, जितनी भी सेविंग सी प्रीमो जेम की सब। इसका वेपन भी है, इसके कॉन्स्टलेशन भी दो निकाले हैं, और ये ऐसी बिल्ड भी है। अभी मतलब उसका फ्लावर अच्छा नहीं है, अभी और बिल्ड होगी वो। नाहिदा आर्कॉन है, जल्दी रीरन हो जाएगा नाहिदा का, शायद 4.2 के आसपास तुमको नाहिदा फिर से देखने को मिल जाए। काजुआ निकाल लेना, अगर काजू अनाउंस होता है आज, अभी 5:30 बजे से स्ट्रीम है, लाइव स्ट्रीम। और काजू अनाउंस होता है तो काजुआ निकाल लेना, Add ast. काजुआ भी कैरी कर जाएगा। तीन मस्ट पुल 5 स्टार कैरेक्टर हैं इफ यू वांट टू नो। पहला है काजुआ, दूसरा है नाहिदा, तीसरी है रेड शोगन। ये तीन कैरेक्टर अगर आपके पास हैं तो आपके अकाउंट में बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। Kamisato Ayaka. Present. और 4 स्टार में 5 कैरेक्टर हैं जो मस्ट बिल्ड हैं। बेनेट, शैंगलिंग, सिंचू, सुक्रोस और फिलहाल कुकी शिनोबू, क्योंकि डेंड्रो और हाइपर ब्लू मेटा चल रहा है। Let's light it up. Teamwork is dreamwork. As one with wind and cloud. Wind strike. Embrace the ice. Take flight. Nice and spicy. My apologies. मेरा तो मन है भाई इस वाली आईडी में काजुआ के कॉन्स्टलेशन निकालने का। वो वाले पे। जिस टाइप से वो बिल्ड हुआ है ना, हम्म। बहुत तगड़ा बिल्ड हुआ है वो। C2। C2 निकालने का मन है। अरे 52 to 22 बहुत रेशो होते हैं, बहुत ज़्यादा रेशो है, प्लस एनर्जी रिचार्ज भी।
अगर एनिमो डैमेज बोनस अच्छा मिल गया ना उसको, Wind strider. हम्म। तो आग लगा देगा वो। Take flight. आग लगा दे, आग लगा दे, आग लगा देंगे। कौन सा कैरेक्टर पसंद आया गौरव भाई तुमको, बताओ। मतलब जो कैरेक्टर तुम्हारी इच्छा हो विश करने की। ये जो पैच आने वाला है 3.7 जिसकी आज अनाउंसमेंट होगी, इसका जो पहला फेज है, मैं सजेस्ट करूंगा उस पर विश मत करना। Clouds high. The birds call. बहुत इजीली हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। अभी कर देता हूँ। If you can complete this domain with only 4 star, I promise to increase 5 subs right now. 5 subs के लिए नहीं, लेकिन तुम केयरलेसली कर रहा हूँ। प्रियांशु भाई क्या हाल है? For justice. 5 subs के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये तुम केयरलेसली कर रहा हूँ। I want to help. Just sharpen my spear. Off we go. Adventure time. Everybody stand here. Get them. Toast. Let me read you a verse. Animal test 6308. Stand clear. Absorption test. Animal hypostate. Know my sword. Rain outlines your fate. ये लो हो गया। ओ भाई साहब, थैंक यू सो मच यार गौरव भाई, थैंक यू सो मच। इसके लिए मैं 1 साल से इस डोमेन में हूँ। लव यू ब्रो, लव यू टू भाई। अरे लव यू 3 4 5 6, बस ये रोल हो जाए। लेकिन अब मैं इसके लिए, इस पीस के लिए इस डोमेन में 1 साल से हूँ। क्या हाल है प्रियांशु? यही 4 4 स्टार है जिनकी मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, कि अगर नए हो गेम में और बिल्ड करना चाहते हो तो ये 4 4 स्टार दिख रहा है जो, सिंचू, सुक्रोस, बेनेट, शेंगलिंग, ये 4, ये तुमको कैरी कर जाएंगे कहीं भी। Let's light it up. Witness the power of Gugwa. Stand clear. Absorption test. Swirl. सुक्रोस को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत ज्यादा भाई। सुक्रोस बहुत अच्छा कैरेक्टर है, स्पेशली तुम्हारा सुक्रोस अगर सेक्रीफिशियल फ्रेगमेंट के साथ है और C4 को क्रॉस कर गया है। C6 पे ऑन पेपर काजुआ से अच्छी है सुक्रोस। मैं नहीं मान रहा तो मैं तुम्हें कंपैरिजन दिखा सकता हूँ अभी भी दोनों का पेपर पे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन काजुआ का इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए काजुआ ज़्यादा अच्छा है C0 पे। लेकिन अगर पेपर पे बात करोगे, If I miss it. सुक्रोस ज़्यादा अच्छी है। The sun is already out? Oh, okay. Just one last experiment. And then we can get some rest. चलो भाई, रोल करने का समय आ चुका है। नहीं, आया का लगा के नहीं करूँगा रोल। इसको अटैक की ज़रूरत नहीं होती, इसको CRCD की ज़रूरत नहीं होती। कोकुमी चूज करके करूँगा।
चाहे वो आलू ले लो, भिंडी ले लो, ये। अरे यार मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं है फीड करने के लिए, ये कैसे पॉसिबल है? इन्वेंटरी में जाके कर लो रोल। अरे यार आर्टिफैक्ट नहीं है फीड करने के लिए, ये कैसे हो गया? हाउ इज दिस पॉसिबल? बता साला, सुक्रोस पे क्रिट डैमेज लगा के रखा है। ये शहने पे लगा कर रखा है। ये क्या हो गया भाई, एकदम से अल्टी पल्टी कैसे हो गई चीजें? अबाउट द कैरेक्टर आई रिसेंटली सॉ वंडर एंड हिज अटैक लुक्ड कूल। अटैक्स, हाँ। इफ यू टॉक अबाउट गेम प्ले स्टाइल, वंडर इज फन टू प्ले, लेकिन डैमेज उतना ज़्यादा नहीं है। वंडर का डैमेज इतना ज़्यादा इसलिए नहीं है क्योंकि उसको फारूजान C6 चाहिए। अगर फारूजान C6 है तो बिल्कुल, और उसका वो भी चाहिए, BIS वेपन भी चाहिए। अरे यार फीड करने के लिए वो नहीं है मेरे पास, ये दे दूं क्या? अटैक, ये अटैक किसी को नहीं देना ना इसका, ये थोड़ी ना देना है किसी को अटैक सैंड्स में। ए ए ओए, बहुत मतलब सपोर्ट हंग्री कैरेक्टर है वो। कोको भी लगा के करूंगा क्योंकि उसी को वो क्रिट डैमेज देगा। यहाँ छोड़ो। Jeweler cherishes भाई 1 साल से वेट करवा रहा है, रोल हो जा प्लीज क्रिट डैमेज पे। 1 साल से रोल करवा रहा, वेट करवा रहा है मेरे को तो, प्लीज प्लीज। अरे यार कोकोमी को HP चाहिए भाई, कोकोमी तो चूज भी नहीं करी मैंने। हक दिया यार, हट। मैं नहीं खेल रहा ये गेम, मेरे को नहीं खेलना। चूतिया गेम है साला। बक, मेरे को नहीं खेलना ये गेम। एक साल से वेट किया है आर्टिफैक्ट का और मिला और हक दिया, वो भी इतना गंदा होगा। थोड़ा बहुत ही दे देता कुछ क्रिट डैमेज वगैरह तो भी चल जाता। हाँ तो कहाँ थे गौरव भाई अपन? वंडरर्स पे। तो वंडरर्स का प्ले स्टाइल काफ़ी फन टू प्ले है, लेकिन जो उसका डैमेज है ना यार वो उतना ज़्यादा है नहीं। उसका तुम्हें डैमेज ज़्यादा करने के लिए तुम्हें उसको वो देना होगा, फारूजान C6। कितना बज रहा? 5, 10, 20 मिनट हैं अभी। मेरे को सेटअप भी करना पड़ेगा ना। time to go. Follow the wind. Teamwork is dreamwork. Into the wind. भाई साहब Take flight.
तेरी 2 से ज्यादा मान नहीं देता क्या ये? बहुत बार ट्राई किया मैंने, 2 से ज्यादा कभी नहीं मार पाया। Time to go. But right now I want any good hydro character to do hyper bloom with reactions. Hydro character. If you want a hydro character, so Picking a I straw think you in the should middle of wait the for downpour fontaine. certainly rouses the spirit. फुल Having कल cast और a tiny हाइड्रो और कौन force आएगी seems और reasonable to the very 100% वो डैमेज stars. बूस्टर रहेगी। Time to go. और हाइपर ब्लू में तो सिंचू भी काम कर सकता है, येलन भी काम कर सकती है, आयाटो भी काम कर सकता है। स्पेसिफिक अगर ब्लूम करना है तो फिर नीलू और कोकोमी चाहिए। हाइपर ब्लूम की मेन यूनिट तो नाहिदा और कोकी शिनोबू है। हाइड्रो कैरेक्टर उसमें मेन यूनिट नहीं होता Clear है। weapon ब्लूम lock में and हाइड्रो climb का step. इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। Add अभी तो ask. तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो, Thank you सिंचू for भी यूज कर सकते हो इवन। विश निकली क्या एक? अरे यार विश क्यों नहीं निकल रही? भाई साहब कितने सारे क्वेस्ट पड़ा खाली हैं। I lost 50 in current banner. Now I have to do 70-80 more polls for guarantee banner character, right? Yes, 75. और अर्ली भी मिल सकता है। यू कैन गेट अर्ली। अगर लक अच्छा हुआ तो अर्ली मिल जाएगा। बहुत बात होता हुआ, मेरे को तो दूसरे पुल में भी मिल गया था। एक बार 10 पुल में 2 मिल गए थे। तो लक पे डिपेंड करता है। तो कौन सा कैरेक्टर मिला तुमको? तुम 50-50 हारे हो, तो कौन सा कैरेक्टर मिला है? और बेजू पे हारे हो? अरे यार चीची। ये चीची सबको क्यों मिलती है? ये इसने साला पूरा गेंशिन का बदनाम करके रखा है ये चीची ने। Time to go. अच्छा गानियों पे आते हैं। ये चीची हर जगह पहुंच जाती है यार, इसने किसको नहीं छोड़ा। साला मेरे पास C1 चीची होकर रखी है, दोनों आईडी में C1 चीची है, किसी को नहीं Clear छोड़ती है weather ये। all around brightens the heart. 5 मिनट में 3 चीची मिली थी एक्चुअली को। पहले कैरेक्टर बैनर पे, फिर स्टैंडर्ड बैनर पे, फिर दूसरी आईडी में गया फ्रस्ट्रेशन निकालने, उसमें ही मिल गई। दुख दर्द पीड़ा, आईडी बंद कर दी भाई ने। ये अच्छी चीज है कि इस बार ने ऊट पटांग चीजें नहीं पूछी। यस, पिछली बार तो ऐसा नहीं किया था, याद है क्या? अरे वो था, वो ले नहीं पाया मैं।
What are your PC specs? Ryzen 5 2600X 1070 GPU 16 GB of RAM Samsung 60 Hz monitor. हाँ ये यहाँ पे दिखेगा नीला, वो उसमें हरा दिख रहा था। ये देखो ना, इसमें दिख रहा नीला बाकायदा अलकायदा। नो, मैंने पुराना वाला खेला है, PS2 पे खेला था। तो रीमेक आई थिंक खेलने की और आगे जाएगा थोड़ा सा। अबे अरे मैं अभी इस गेम के अलावा और कोई गेम खेल नहीं रहा यार। चल जल्दी खत्म कर भाई, मेरे को वहां पे वो स्ट्रीम भी चालू होने वाली है 10 मिनट में। जुर्बान, ये साला हेडफोन क्यों पहना हुआ है? क्या मतलब कि फाउंटेन में ऐसे एनिमीज आएंगे? अरे यार मैं समझ गया, वो वाली मैंने कलेक्ट नहीं की है इसलिए तो उसमें विश नहीं निकली। मैं वही सोच रहा था विश क्यों नहीं निकल रही है। सीजर 49 स्टैंडर्ड विश भी मिलने वाली है, कुछ है क्या, मिल सकता है क्या? अरे घंटा कहाँ भी दे दे, कहाँ भी दे दे, कहाँ भी दे दे, कहाँ भी दे दे, नहीं देता यार। पाँच और एक 6 और 300 प्रीमियम भी मिलेंगे। आइए दो और विश हो जाएंगी, लेकिन नहीं मिलेगा मेरे को लग रहा है। मिक्को यही मिक्को। मैं चलो वहाँ पे सेटअप जमा दूँ, स्ट्रीम चालू होने वाली है 10 मिनट में। twitch.tv if Guma got ahead, and T1 made a certainty that he would. And I think we've seen a continuation of the adaptations like चालू हो गई क्या? चालू नहीं ना हुई है अभी यार, हमारा कूल डाउन चल रहा है इस बार, क्या बात है। ये भी सही था भाई।
जब तक और कुछ करना है क्या? बाकी वो तो उसने दिया ही नहीं है। ऑफ ऑफ। चलो इसको बंद करें अपन, मतलब इसको पीछे छोड़ दें और अपन चलें इस पे। Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth. वो वहाँ पे नाटक कर रही है, काजू आवाज निकाल रहा है। हम्म, 6 मिनट बचे भाई। डुएल द समनर समिट पीजीसी पे डिपेंड होने वाली क्या? मिक्सर से बंद कर दो गेम का आवाज, मतलब डेस्कटॉप आवाज ही चला जाएगा ना सीधे सीधे। बंद हो गया ना वो तो। कर दिया साले को बंद। वैसे भी बहुत कम पे रखता हूँ उसको तो मैं। कुछ खाने पीने का इंतजाम करके आता हूँ तक, कॉफी वॉफी का।
कामिसातो अयाता अयाका सॉरी अयाटा कह रहा हूँ अयाटा लोल टे 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 ये गुड मॉर्निंग के मैसेजेस बड़ा परेशान हूँ मैं। डेस्कटॉप की उसकी आवाज आ रही है ना? हाँ डेस्कटॉप की उसकी आवाज आ रही है ना? क्या सही है फिर क्या है स्ट्रीम बस 1 मिनट में रिफ्रेश करनी पड़ेगी लेकिन मैं तो आपका स्ट्रीम ही देख रहा रिफ्रेश करनी पड़ेगी वो 1 मिनट बाद है ना? हर बार ऐसे ही होता है। होगा हर कि नहीं बार इस बार। होता है वो हर बार ही होता है वो चालू नहीं होता रिफ्रेश करना पड़ती है। मैं चैट पे लिख दूंगा कोड्स। कोड्स हाँ चैट पे लिख के उसको पिन भी कर देना। हाँ पिन पिन आप कर सकते नहीं तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे पास एडमिनिस्ट्रेशन पावर है भाई मॉडरेटर में भी। नहीं पिन नहीं कर सकता लेकिन पिन नहीं कर सकते ठीक है मैं कर नहीं। दूंगा चैट पे लिख देना। दूसरा कोड जब आएगा तो फिर दोनों कोड लिख के टाइप करके डालना ताकि मैं उसको भी पिन कर ताकि दोनों कोड दिखें। ठीक है 7 सेकंड और यहाँ पे चालू होने वाला है और ऑटोमेटिक चालू होगा क्या? ओह हो गया। Whoa! You must be the legendary traveler! I've heard a lot about you. Oh, are you following the tournament too? It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird from Fontaine. I've been posted here to cover the King of Invocations Grand Prix. Since you've also taken interest in the tournament, how would you like to be a special contributor for my column? Yeah, of course you'll receive payment as a contributor, and your name will even appear in the credits. If I'm not mistaken, you're even acquainted with some of the contestants, right? Oh ho ho! I really do have an eye for a story, don't I? It seems like this will be a solid piece. I can see it now. Exclusive inside scoop on the renowned traveler and secrets of the TCG Tournament Masters. How does that sound? It has a nice ring to it, no? It's just a working title for now. Any journalist worth their salt knows how to look past the surface and get the real story on any breaking news. But it's important to always keep the stories based on actual facts. We can always discuss more details later. Of course, I'll be covering the latest stories from the King of Invocations Grand Prix. But I'll definitely be keeping my eyes open for any other potential news leads. When it comes to breaking news, I'm always the first on the scene. नहीं उसी का ही Anyway, बना I दो। won't keep chatting your ear off. There's a lot more exciting news waiting to be uncovered. So let's have a ये look. लाइव स्ट्रीम का थोड़ा सा। Do my ears deceive me? Or do you two have some breaking news to share with me? Wow! So this is the King of Invocations Grand Prix? A card snatcher? How very interesting. City on the Lake teams with talent in TCG tournament as young prodigy best Favonian cavalry captain. Down on the ground, the dice spin around, while high in the sky, the sun shines bright. All right. Say your piece, challenger. I, Kaidahara Kazuha, humbly accept this duel. Inazuma's Archon bolts her way to the semifinals, only to be stunned by a crafty opponent. The nerve.
saying that in the presence of me and A? Lightning from Inazuma won't be able to reach me in Fontaine, right? You must be tired after the walk back to shore. Perhaps I should let you go first. If this fried tofu with all the frills hasn't gotten too cold, I would be happy to play. Tournament? The tournament has already finished. I used Forbidden Hand at the opportune moment. Rest assured, there's no destination I can't deliver to. Thank you for choosing Komania Express. Express delivery! कोको में आ सकती है यार बैनर पे। Wow. So, this is Sumeru? There are so many huge mushrooms here. They're big enough to lie on. पहला कोड आ चुका है इसी के साथ। Hello, everyone. Welcome to the Genshin Impact version 3.7 special program. I'm your host, Sarah Miller-Cruz, the voice of Lumine, and I have a new friend here with me. Make sure the truth comes first and report stories that stand out the most. This is reporter Charlotte from the Steambird. A pleasure to meet you. Hey, everybody. I'm Maya Aokitaro, the voice of Charlotte. And as mentioned just now, Charlotte is a reporter from Fontaine, and she's currently working for the Steambird, which many of you may have probably already heard of. Oh, for sure. It's been mentioned in several places throughout the game now, and if I remember correctly, Mona also writes a column for the Steambird. So it seems like it's pretty famous, and people all across Nevada are reading it. Yes, that's right. But I'm not the only special correspondent in our special program today. We also have other special correspondents reporting from the field that will help us bring all the information we need about this upcoming version. So exciting! Okay, I bet everyone's ready to see what we have in store, so why don't we dive right in? Right bottom. Okay, seems there's quite a lot going on in the picture here. I see a couple familiar faces. And let me guess, the cute one in the middle with pink hair and a camera in her hands must be Charlotte, right? Ooh, that's right. She is a journalist after all, so she's got her equipment ready at all times. So in the upcoming version, Charlotte will be appearing in the event storyline, where she'll be dispatched to cover a popular Genius Invocation TCG competition. Given that the competition is an international event, Charlotte will be heading to several nations to gather her news materials. Okay, that explains why we see so many friends from different nations in the picture here. Does that mean that she's going to be traveling around Teyvat then? You bet. As a foreign correspondent, she'll definitely be checking out the event venues in different locations. So get ready to embark on a Genius Invocation TCG journey. However, a keen and active reporter like Charlotte won't only focus on the Genius Invocation TCG event, even though that's really important. But during this journey, she will also be investigating a very strange case alongside the traveler. Ooh, a strange case, huh? Okay, that does actually sound really newsworthy. Yeah, right? But that's all I can share for now. The mystery will be yours to unveil in version 3.7. So if you want to find out what happens, then make sure you don't miss out. Yay! We hope our travelers have a great time in this event. In addition to the event storyline we just introduced, the Adventurers Guild has also
there will be a total of 4 event game आवाज नहीं modes, आ रही इनकी including मेरे को। a Tour of Wonders, 0-Hour Invocation, Ever Motion Mechanical नहीं। Painting, and Heart of the Dice. In a Tour of Wonders, the organizer has set up checkpoints in various nations. After you complete the required challenges by navigating obstacles or defeating monsters, you'll be able to obtain commemorative stamps at the checkpoints. So collect more of these stamps during your sightseeing tour to obtain the corresponding rewards. Okay, I see. So the stamps will be like proof of your experience traveling in different nations during the event. You know, just like collecting stamps in a passport. Exactly. Next, we have 0-Hour Invocation, which is an unofficial tournament organized for our passionate TCG players. Unlike the official tournament matches, this format adopts a special rule set, so you won't be able to use your own decks. Oh. Instead, you'll have to build a deck by selecting cards out of the decks prepared by the organizers. Oh. And chances are you'll get to duel against some familiar faces. Okay. Sounds like fun already. All right, what about Evermotion Mechanical Painting and Heart of the Dice? I think many of our travelers have एक बार आ played चुका है। Evermotion Mechanical Painting before, but this game introduced by a dreamer from Fontaine has undergone a few new changes. So this time around, you need to adjust the position of the अलग है ये। mechanical painting surfaces by swapping or Surface rotating them बदल सकते first, and then install the appropriate gears on the preset points to restore the painting. And I've heard that the paintings are all based on Genius Invocation TCG cards. How awesome is that? That's gonna be so cool. And based on the people we've met, you should never underestimate Fontaine's pursuit of mechanical rewards designs. क्या-क्या But मिलेंगे of course, पता है? I'm sure our keen ये देखो travelers rewards। should be able to restore वो those आ रहा है। paintings with just a few Ibis attempts. Spear सा। Or more than just a few attempts if people need it. Lastly, we have Heart of the Dice, which is a combat game mode. During combat, you'll be able to obtain random elemental dice by defeating monsters. Use the suppressive roll skill to consume all the dice you possess and unleash a shockwave that deals damage to nearby opponents, while also granting you random buffs. More dice consumed matching the elemental type of the active character will result in greater damage dealt by the shockwave and higher chances of obtaining more buffs. Okay, it seems like these are some special dice, so we'd better make good use of them. Yep, and travelers will be happy to know that there are a variety of rewards waiting in these events. In addition to Primo Gems and enhancement materials, rewards also include a new 4-star bow called Ibis Piercer, along with its exclusive refinement materials. Yay! So exciting! All right, that's all we have regarding the main event in the upcoming version. On to our next correspondent. Wait. That may be all for the version event, but I still have something else to report. Oh, okay. In version 3.7, there'll not only be a Genius Invocation event, but also a major update to the TCG game itself. What? Okay, that's awesome. What can we expect to see in the new update then? So, in the upcoming version, many new cards will be added to Genius Invocation TCG, including character cards, monster cards, and action cards. Amazing, right? Yeah. And it's also noteworthy that the cards of the Animo, Geo, Electro, and Dendro Archons will also be available after the update. So we can Ooh. expect to see some incredible and fun new decks. Nice. Okay, that's gonna be quite the update. And there's more. So, with so many cards being added, how could we fully enjoy them without some new game modes? So, in version 3.7, the Arena of Champions mode will be available too. And what'll be different about this mode? Glad you asked. In this mode, travelers must use their deck to duel against each other and accumulate a total of 5 victories. Ooh. As you can imagine, that can be a serious test even for a Okay, seasoned bro, going duelist. for studies, Plus, ये 3 advanced defeats will upcoming. result in a failed रुक जाओ, challenge जो attempt. codes You'll have मिल to रहे हैं ना, start उनको all redeem कर over. लेना। So, if Oh, you're feeling, no. if you're feeling जो confident about your कोड मिल deck रहा है and उनको your रिडीम TCG कर लेना, skills, 300 then प्रीमियम be sure to मिलेंगे। come to the Cat's अभी एक Tail कोड मिला and है। give it a shot. Okay, that sounds pretty intense. Will there be anything for someone less experienced, you know, maybe like myself? जो कोड पिन मैसेज No पे दिख रहा है worries, ना, I got उसको you. जाकर जेंशिन Okay, पे so रिडीम कर another लो। TCG mode is called the Forge Realms Temper, which will also be available. You'll be allowed to configure the difficulty of the game mode, as well as to choose from a bunch of additional conditions to score extra points. Okay, perfect. I'll definitely be picking some conditions that suit my decks the best. What's happening? What is going on? That sounds cute. Where's it coming from? I got so caught up in listening to you two talking that I almost forgot that I'm on the job. Anyway, here I am. Aww. I have an urgent delivery for you. Please sign here, and I'd really appreciate it if you could leave me a good review.
Thank you! Oh my gosh. Amazon So सेल्समैन है cute. क्या ये? Amazon सेल्समैन, ये आ गया दूसरा कोड भी। गौरव ये भी रिडीम कर लो। ये सेकंड वाला आ गया, अब एक और तीसरा बचा है, वो बैनर के साथ आएगा शायद। बैनर नहीं दिखाया ना अभी। स्पेस दे के करो उसमें, एक्चुअली स्पेस दो उसमें। एक्चुअली स्पेस दो उसमें, स्पेस नहीं है। यस। Welcome back, travelers. Our two special correspondents this time are dun da da da. It's me! It's Jenny Yokomori, the voice of Yoimiya! Hi, everybody! I'm so excited to be here doing the special program. This is one of the most exciting moments of my life. एक चीज ट्राई कर रहा हूँ, आप डिलीट मार देना। Meowdy, travelers! I'm Julia Gu, voice actress for the new playable character, Kirara. Okay, so you were in a kitty box just now, so thank you for that urgent delivery. Yup, that's just Kirara's job. She is a courier like no other. More like Purrier. Ooh, meowster for done. But before we get to hear more about Kirara, why don't we check her out first? Yay! Let's do it! Whoa, the scenery here is wonderful. I've landed the perfect job. Coming through! Service with a smile! Oh my gosh, I want her to be my best friend. She's so cute! Is Her tails! so cute. Her tails! Her tail's made Cute a to her. heart. That's the most adorable thing I've ever seen. I Oh, know. बिल्ली जैसे पैर है उसके, Did दो you guys पूंछ। see her in the little box? It was like, oh, she coming. Oh, she coming. Also, her ult is like really cool. I want to so eat cute. the jellies. I want to eat those slimes. Kirara works as a courier for Komaniya Express and often makes international deliveries. She's also a yokai from Inazuma called a Nekomata, and there's nothing she can't deliver. Oh, okay, that explains like the cute little kitty cat tails and why her shoes are like those cute little cat claws. They have like the toe beans at the bottom, and I want a pair. So, actually, those are just her regular feet. Oh, then I'm What? embarrassed. For Kirara, even though she could use her yokai powers to have human feet, she's still a Nekomata and feels more comfortable using her own claws to move. That and makes her own sense. They're beans. so cute. They really are. And also, Kirara has two tails. Can you tell us anything about that? Oh, yeah. Two It's tails. said that the tail represents a Nekomata's potential. So, with two tails, I guess this means that Kirara is a really powerful yokai. Some bandits might assume that Kirara is an easy target, thinking that it would be easy to steal a package from a young girl, but they are in fact fools. And this mistake always ends with the bandits running off after she gives them a good threshing. I'm obsessed with this. So She's awesome. just little kitty cat girl boss. Like, okay, and having her as your courier basically like determines that your package is gonna get there safe. That is incredible service. Oh yeah, no doubt about that. Kirara is a very responsible worker and will do her best to ensure every order she receives is delivered. Of course, if the client can spare a meowment, she doesn't mind receiving a good review. Oh my gosh, she is so cute and diligent. I would definitely give her an extra tip right on the spot. Absolutely. Like catnip, fish, Mora, whatever she wants. Okay, so how did a yokai from Inazuma end up working as a delivery person? What's the line there? Okay, well, if you think about it, the yokai in Inazuma do seem to have a mix of jobs, so... True. Well, speaking of which, even though Kiara is a strong yokai, she does care about her work and enjoys her job. She also enjoys human society, fashion, going to places she's never had the chance to visit before. Her deliveries give her a way into human society and also allows her to explore new places.
To her, working is basically like getting to take a series अरे यार of इन लोग कितना बात करते हैं expense-free जल्दी से trips. कोड दे दे बस Wait, you know what I just realized? गैस Charlotte मेरा is गद्दारी कर technically दे traveling for work too. So maybe they can get together and enjoy some expense-free outings. Ooh. Okay, I think everyone is waiting to learn more about this yokai courier's abilities. Absolutely, yes, correct. For sure. Let's move into Kirara's skills. Oh. Kirara is a Dendro element sword user and can effectively assist her companions while also making world exploration more efficient. Okay, her attacks look amazing. She swipes just like a cat using its claws. I love it. Yeah, she is a Nekomata after all. Additionally, her exploration talent allows her to move near birds or other smaller animals without startling them. She's an apex predator. I love it. That's so cool. So it's gonna be easier to get like fowl and raw meat and easier to hunt. Yeah, watch out, Timmy. Timmy should watch his back. Oh, not Timmy. No. Yes, Timmy. No. Sorry. Sasses me. Well, she's always going to keep you well fed, no matter the means. By tapping her elemental skill, Kirara creates a Dendro shield that can protect her from harm. Okay, shields are great. They'll keep both her and the delivery safe, which is all that matters. डैंड्रफ फ्लाई भी कर रही है Holding down the elemental skill will not only grant shields, but also put Kirara in a unique state. Cool. So the whole thing is that that's the cutest thing I've ever seen in my entire life, and I need you to immediately tell me more about it right meow. Oh, no problem at all. Thank you, yes. In this state, Kirara will deal Dendro damage upon slamming into enemies, but more uniquely, this state will also drastically increase her movement and climbing speed, along with her jumping ability. Okay, that sounds super useful. So just so I can get this straight, she'll be able to just climb straight up walls? Oh yeah, she'll be able to go straight up a vertical surface in this state. Okay, well, that's amazing. The best thing ever. She's gonna be so great for exploring. And I guess that's one of the reasons why she's a trustworthy courier. And finally, with her elemental burst, she smashes the enemy with a special delivery package, which then explodes into numerous small dendro bombs. These bombs will then explode upon contacting enemies or after a duration, dealing dendro damage. And can we just appreciate the fact that the bombs are kitty-shaped? Because I'm obsessed with that. And so cute. So cute. She has kitty-styled attacks, kitty-styled deliveries, and she also has kitty-styled bombs. Amazing. She is adorable. So, aside from Kirara running to various nations making deliveries, I also heard about another one of our friends leaving their home to explore the world. Ooh, so who wants to go on a trip? Oh my gosh, wait, is it Yoimiya? Because you guys are like looking at me, a humble PNG. Amazing, okay. Maybe. Well, I think you might be knowledgeable about traveling across nations because you have पहला information on your non-archon story character quest. जिसका story quest I आएगा totally दूसरा do. I was just being a little stinker. Okay, so the Sakoku decree has been repealed for some time now, and Yoimiya has been wanting to go out and see the outside world. In version 3.7, Yoimiya, the second act to Yoimiya's Carassius Arata story quest is about to begin! Woohoo! She will be embarking on a globe-trotting adventure, heading to Sumeru, the Nation of Wisdom, alongside काजुआ बोंजाई याद डालेगा That's a pretty first far time trip. ever in Genshin I mean, Impact personally, बोल के I'm देखोगे तो really बोलेगा looking योइमिया का forward second to it quest too. Not that I'm biased or anything. I seriously cannot wait to experience what happens in the 3.7 update. Right? And, and, you know, traveling with a girl is easygoing and cheerful and cool and amazing. Not that I'm biased or anything, as Yoimiya will be a joy. I think she's probably, like, the best, like, travel companion. Again, not biased or anything. But to ensure that everyone gets the most out of this story quest, I'm gonna be a good bean, and I will not say any spoilers. That way our travelers get the chance to explore the story. I'll be good. Okay. But That's nice of you. Thank you. Yes, see? I'm good. But when the time comes, I hope Yoimiya's new story can brighten everyone's day, just like she always does. Aww. Yeah. Of course. Ding. For sure. And we're not biased. No, not biased. No, none of us. Just honest. Honest. Also, kind of like speaking of honesty, I was honestly wondering what new companions can travelers invite for their teams in version 3.7? Right. That takes us to our event wishes.
I think this is something our travelers are always interested in. So, Yes. for further details about 3.7's event wishes, please direct your attention to the big screen. Ta-da! No! Where did that come from? अरे I just remembered that यार we're today's reporters. बोला ही था मैंने. What? Oh, According to reliable sources, the first half of 3.7's event wishes will boost drop rates for Yoimiya and Yaimiko. At the same time, Kirara will also be making her debut in these event wishes, so travelers who want Kirara might want to take note. And the second half of version 3.7's event wishes will see ये Kaidahara, अच्छा. Kazuha, and Alhaitham getting their own reruns. Sarah, why are you talking like that? Because we're reporters. Thanks, Sarah. With the help of their companions, we hope that all our travelers will be able to keep happily exploring Tavad. And now to Jenny with the weather. The weather is still weather. Anyways, when travelers follow Yoimiya to Sumeru, they might also encounter their old friend Kaveh. This is because Kave's very own hangout event will also be available in version 3.7. Oh, yeah, our master architect from Sumeru. Yeah, and Kaveh is quite the character. Even though he seems super carefree, he has certain principles that he always clings to. I'm sure as we spend time with him during the hangout, we'll get to know him a lot better. Oh, we're gonna be besties in no time. So travelers interested in learning more about Kaveh will get to experience his stories firsthand in version 3.7. Definitely something to look forward to. Yay! यहाँ और कौन है? Woo! Now that we've covered the news stories coming our way, I think we can move on to some news about other fun events coming in version 3.7. What do you think? I think that's a very good idea, Sarah, my friend. Okay, so not only are there events, but there will also be tons of incredible rewards and prizes too. Ooh! I'm so excited. You should Oh, be. so am I. So, without further ado, let me introduce the first event. In version 3.7, the Divine Ingenuity Collector's Chapter event will be available. ये Oh, ये. I remember this Theater event. mechanics. This is the one that lets you design your own domain. नहीं ये नहीं है वो. Right. Oh ये नहीं है वो. However, Oh, this यही event's हो. gameplay has been upgraded a bit, and the development team has specifically designed some stages for everyone to challenge and get used to the rules. For example, the first stage requires you to build a mechanic to defend a monolith, and the second will be a coin-collecting fiesta that everyone's familiar with. दोनों को जोड़ दिया. Okay, yes, so fun story. I'm not the best at collecting coins, so I already know that I'm gonna be a little bit all over the place in this one, so yeah. That's okay. As for the third stage, there will be multiple areas available, and everyone will be able to get a special item. Artificer coins. Oh, I want it. You're gonna get a lot of them. Thank you. These coins will allow people to buy various buffs from buff stations located in each area to boost their team's effectiveness. Nice. Okay, so we'll be able to keep getting stronger as we progress. Exactly. The fourth stage requires everyone to keep their characters alive while they go around collecting coins. The last stage features a buff bestower device capable of amplifying your opponent's capabilities, so you're gonna want to destroy that first before engaging them in battle. Or Oh, not. there's so much to do. Okay, so just to confirm, we can use all of this while we're making our own domains, yes? Yes. Aside from different landforms, mechanisms, or coins, travelers can also adjust how many stages are active per room and opponent settings. Even buffs and buff bestowers can be placed inside these stages. Wait, that's so cool. Okay, so it sounds like the travelers will have even more creative freedom this time around. So, what I'm gathering is that everyone should use their imagination and sprinkle as much creativity as they can into their designs. You know, a little bit here, a little bit there, a whole lot of traps. Well, hopefully they'll also sprinkle some ingenuity as well. Get it? Get it? That's literally what I just said. Ingenuity, traps, tomato, tomato, yeah. Well, Traps. sure, as long as it's creative. Chaos. Oh dear. This time, there will also be co-op mechanics for this game mode. So if there's a stage you can't beat on your own, you can bring your friends and try the challenges. Or, fall into Jenny's traps together. Yeah. And remember, domain creators also must clear their own designs before they'll be able to share them with others. Okay, seriously, how do people clear some of these stages? They seem like they're gonna be really difficult. I don't have a good answer for you other than the fact that people are kind of amazing. Yeah, I don't know that's if you guys have seen, but there are videos out there of people showcasing their own stages, and it's crazy. It's amazing. Oh, absolutely. So, I hope all our creative travelers out there won't miss this event. Remember to share your codes or videos and let everyone play your domains. Traps.
Oh dear. Okay, so next, we have a challenge event called the Feast of the Departed Warriors. A mysterious domain has appeared near the Falcon Coast, and its depths are crawling with powerful foes. Travelers will need to rely on their martial prowess to defeat them and earn rewards. Ooh, departed warriors. Sounds spooky. I thought so too. Anyway, this event should be one that many travelers are familiar with. However, let me give a quick overview for anyone who might not have seen this one yet. Thank you, Sam. This event has 3 types of dangerous adversaries awaiting our travelers. They're each based on the Thunder Manifestation, Eon Blight Drake, and the Baptismal Bishop Herd, respectively. Travelers can also add additional conditions to their difficulty multiplier in this challenge, with increased difficulty resulting in greater rewards. Okay, I think I get the gist of this one. I heard Thunder Manifestation and my heart stopped a little bit, so full disclosure, I'm probably not going to be doing the increased difficulty, but I hope everyone's ready for a challenge! Yeah, this one looks like it could be tough. Don't worry, travelers can still get key rewards and materials by completing the challenge on lower difficulties, including Primo Gems. Oh, thank goodness. Travelers who are looking for a real challenge can try the higher difficulties for a proper fight. I heard lower difficulties, and I once again feel safe. Cool beans. Let's move on to the next event. Okay, so this one is another returning event for version 3.7 called Phase Trials Hypothesis. So maybe some of you remember Jammy, the Sumeru researcher who was struggling with his thesis proposal. Well, this time, he needs your help as observers in an experiment. We're pretty sure all our warm-hearted and friendly travelers will give him a hand. Also, as a little, incentive, each experiment also offers rewards upon completion. Of course we're gonna help him. Besides, we're getting rewarded for offering our help, so what's there to lose? Exactly. Right? So, given our travelers are honorary knights of the Knights of Favonius, and heroes who have assisted the Liyue Qixing, as well as, actually everyone, I think. Yeah. So, pretty much everybody at this point, I think, yeah. Yeah. Well, helping this one researcher should be just another walk in the park. Okay, so during the event, travelers can defeat enemies to gain phase tinctures. When they get enough phase tinctures, they can use them to enter the time dilation state. In this state, they can identify the weaknesses of their opponents mid-battle and select opportune moments to capture more weaknesses in their opposition before using their Super Sense skill to deal massive damage. Ooh, having the ability to detect weaknesses is very helpful when facing challenges. Not to mention, the damage dealt by this Super Sense skill is pretty incredible. Oh, it's really cool. That sounds really useful. It can take care of opponents in a snap. Like taking a picture. I didn't know you were gonna be channeling your inner Sino. I didn't know. Perfect. Okay, but remember, this event requires you to use the corresponding trial characters for the challenge. Ooh, good. Okay, this way everyone will be able to try out more characters. Exactly. Okay, there's seriously so much for all of us to experience in version 3.7, and oh, would you look at the time? Oh, yeah! Okay, the 3rd redemption code is coming right up. Let's have a look together. Here it comes. Yay! Get ready. गौरव बोल रहा होगा ये साला कब देंगे कोड, ही आ गया कोड लो. डालिएगा थोड़ा एक्चुअली जरा इसको. अभी डालता हूँ. Finally. And that's the end of today's report. It seems like all our reporters have returned to the studio Enjoy now, which 300 means Primo Gems. we've reached the conclusion of our program. This has been so much fun. I can't believe it's over already. It happened so fast. I know! I wish we had even more to share. So, how did you all enjoy being on the program today? Oh my gosh, it has been so cool being on the program, and
Oh, I can't wait for people to hear Kirara. She's so cute. She is. So cute. Seriously, this is so much fun. I've been wanting to do one of these programs for the longest time, and I'm so excited that I get to be here and talk about Yoimiya. And also, I'm super excited for Julia and Maya to be joining the cast. Welcome, you guys. Welcome. Oh This my has been gosh. amazing. This has been so much fun today, and I am just also really excited for these mini games, mini events. Yeah. I'm so excited, especially the Evermotion mechanical painting. Mini games, big excitement. Yes, because I just love the puzzles. I just love them. Don't forget, there's a strange case to investigate at the tournament grounds, so players should be sure to check that out. And yeah, I was happy to join the program with you all and share all these details about version 3.7 with everyone. So hope you all have a fantastic time in the upcoming update. All right, this is the end of our program. Thank you so much for watching, everyone. Bye. Bye. Bye, guys. Thank you so much for boring program. Bye, सालो. ये क्या है? ओह, कट सीन. फॉन्टेन है ये तो. ए, मेरे को पता था फॉन्टेन का स्नीक पीक तो आएगा. ये क्या है? किसी ने हम खोर गए पानी के अंदर रहेगा भाई. हाँ पानी तैर के के जाना है अंदर क्या? रहेगा वो. हाँ. Aquaman. नाइट भाई. अरे अब आ रहा है यार. तो हिमांशु की अब स्ट्रीम ही खत्म हो गई. लो, मुझे भी कोड बताओ कोई. मैं भी रिडीम करूंगा. मुझे भी तो कोई कोड बताओ. अब भी उठाता हूँ स्ट्रीम पे से. ए, खुद की स्ट्रीम से तो उठाऊंगा मैं. एक 2 मेरा आवाज नहीं आ रहा. कैसे? मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा है मेरा आवाज नहीं आ रहा. वही तो बोलूं, कैसे नहीं आ रहा. प्रीमो जैम बोलते. कावे आ गया क्या? कावे 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 आजा. हट तेरी बहन. हट. नहीं आया. नहीं मिला यार. स्पेशल इवेंट करता हूँ. इधर नहीं, इधर आ. वहां पे क्योंकि मेरे को चैट देखनी है. क्या हाल है मांझो? कौन से कैरेक्टर विश करोगे? सोचिए कुछ. पानी डाल दूंगा. सब किए करा पानी डाल दिया इस गेम में. अरे यार, ये साला की रेसिपी देखनी पड़ेगी. बैनर्स कौन कौन से हैं? याइमिको और योइमिया पहले, काजू और अलाइताम बाद में.
क्या मिल गया मेरे को? अभी वो भी करना है यार, इवेंट भी, उसमें को समझ नहीं आई रेसिपी, देख के करना पड़ेगा स्ट्रेटजी से कहीं से, बाद में करूँगा। चलो तो अब हम चलते हैं। किसी को स्पाइरल करवाना हो तो बताओ, रात को आऊँगा, वरना रात को आज नहीं आऊँगा, कल आऊँगा अब डायरेक्ट। हिमांशु का तो कर दिया है कल स्पाइरल, और बचा किसका? शोनेन का ही बचा है, वो आया नहीं है अभी। वो कह भी रहा था मैं खुद करना चाहूँगा। मैंने कहा अच्छी, बहुत अच्छी बात है। तुमने कर लिया भाई वेब इवेंट? कर रहा हूँ ये। बस का चीची कहाँ है? करता धरता करता धरता पालन हरता। चलो वो तो मैं बाद में कर लूँगा, अब मैं फ़िलहाल चलता हूँ। किसी को नहीं करवाना ना स्पाइरल? ठीक है, तो फिर आज नहीं आऊँगा मैं, कल आऊँगा डायरेक्ट। बाय बाय। यो शोनन आ गया है। तुम्हारी बात हो रही थी। स्पाइरल करवाना है किसी को तो बताओ, रात को आऊँगा, वरना आज नहीं आऊँगा फिर मैं रात को, कल रात को आऊँगा डायरेक्ट। क्योंकि स्पाइरल रीसेट होने वाला है मंडे को, शायद रीसेट होगा स्पाइरल। मंडे हुआ कि कल? हाँ, मंडे की नाइट में हो जाएगा रीसेट। C2 काजुआ निकाल लूँगे। नहीं यार, लाइताम पे जाऊँगा। ऑलरेडी डन। अरे क्या बात है, बढ़िया। मतलब किसी का नहीं बचा ना, सबका हो गया है। जिसका जितना हो सकता था उसका उतना हो गया है। तो फिर हम आज रात को नहीं आएंगे, अब कल आएंगे डायरेक्ट। यार इच्छा तो है आज का C2 निकालने की इस आईडी में, लेकिन चियाबुरू ई का सीड 10% कम भी कर देता और रीसेट भी कर देता। सीडी कितना है इसका? 6 मतलब 5.4, 9 मतलब 8.1। चियाबुरू। चलो गाइस, बाय बाय, कल रात को मिलते हैं। Company, two's a crowd, three's a party coming, move around like first rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Slide a die, lay low, hitting heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with this steady.
over till the fat lady sings. I owe you a trip, cause me and